getting. Yes. Okay, good morning, students. This is Dr. Mukul Jain, and we are studying our subject corporate tax planning. In the earlier session, we have studied about what is tax planning. We talked about what is tax avoidance. We talked about what is tax management. We also talked about what is tax evasion. Uh, so we discussed about the difference between these. Then we also discussed about basic income tax laws, income tax slabs for general citizens, for senior citizens, for super senior citizens. Then I also gave you an illustration of two kinds of tax slabs in this current financial year, which is financial year 2021, which is going on. So the assessees have got two options. Either they can select one option wherein they can avail of any exemptions and deductions, whereas there is another tax slab where they will not be able to avail of any exemption and deduction. It's a flat rate. That is, first 2.5 lakh, the tax rate is 5%. Next 2.5 lakh, it is 10%. Next 2.5 lakh, 15%. Next 2.5 lakh, 20%. Next 2.5 lakh, 25%. And then the balance, if any, will be taxed at the rate of 30%. So that's a flat rate. So you will not get any deductions and exemptions. Fine. So we did some illustration also. I told you the difference. Then yes. Then we also talked about what is HUF and what is the benefit of HUF, what is the importance of HUF. Here also I showed you the illustration that who can start an HUF. Any family which falls under the definition of Hindu undivided family can start an HUF. So the person should be a married person and a male person, and the so-called head of the family is known as Karta. So in order to save tax, they can form two heads of income. So a person can have two entities. So last time also I gave you this example. If Mukul Jain is an SSE in the eyes of income tax as an individual, so but if Mukul Jain starts its own HUF, Mukul Jain HUF, then he can show some income in Mukul Jain HUF. So if I have got two sources of income, so one source of income could be in Mukul Jain as an individual, and the second source of income could be in Mukul Jain HUF. And Mukul Jain HUF will have to have a different bank account, will have to have a different PAN number, and will have to have a different ID and password in the income tax side. Fine. Okay, next time, I think tomorrow, let us, this thing has just come in my mind. So tomorrow I will also go to the income tax website and I will show you my own account, how to file the income tax return. So because you people should know, once you are out and you start earning, you will fall under tax bracket. The moment your income is above 2.5 lakh, you fall under tax bracket. So you must know, how to fill up the income tax form also. So that also, so tomorrow, I don't have the ID and password right now before me. So we will do that also quickly. Now, I want to take another very important topic today before going further. This topic is known as residential status. So for that, I'll have to share my presentation to you. Residential status. This is the slide of residential status presentation. Okay. Now,
Whether it's an individual, whether it's a business firm, whether it's a company, we need to determine what is the residential status of the company or of the individual. If the person is a resident of India, then the Indian tax laws will apply. If the person is a foreigner or a NRI, or the company is registered in a foreign land, then it's a foreign company. It's not an Indian company. So we have to see what kind of taxation laws will apply. So that is why it is essential to know the residential status of either a person or a business firm or a company, or even a HUF also. Right? I hope you are able to see this slide on your screens. Yes? Yes. Good, good, Yes, Ravi. sir. Now, if you see this slide, individual under section 6, subsection 1, residential status, you can be either resident of India or you may be a non-resident of India. Like we could call NRI, non-resident of India, or a foreigner. So a basic condition to be to be called as a Indian resident. Mind it, we are not saying Indian citizen, we are saying Indian resident here from the income tax of point of view. So they say that there are two basic conditions. Number one is that a person should be residing 182 days or more in India during the previous year. For example, currently it is 2021, so it is the assessment year of 1920. So 1920 becomes the previous year. So even we as an individual also have to file our income tax returns. Although, as I told you last time, the tomorrow was supposed to be the last date. 31st July is normally the last date, but this time, the extension has been given. So therefore, even I have also not filed my return for 1920. So whether I should be treated as an Indian resident or non-resident will depend on this condition. So I should have resided 182 days or more during the previous year. Well, I have resided 365 days because I have not gone anywhere abroad in the past year. So I am a resident. Or if suppose somebody was not able to complete 182 days in the previous year, then there is a second condition, or he or she should be residing 60 days or more in India during the previous year. At least 60 days plus, that is, and residing 365 days or more in India during 4 preceding previous years. So that means this person should have stayed at least 60 days in 1920. If we are considering this assessment year 2021, then in 1920 he should have stayed 60 days, and in 1920 se pehle, during 4 preceding previous years. 1920 is one, then 1819, then 1718, then 1617. इन चारों को मिला के, if you count all these 4 preceding years, he or she should have stayed at least 365 days in the 4 preceding years. So either first condition or second condition should be met, then this person will be known as resident of India in the previous year. So accordingly, the taxation rule will apply. Now there is an exception. There are some exceptions to this rule. Number one exception is that if Indian citizen leaves India during previous year for employment outside India for taking or purpose of employment. Suppose you join a company and the company sends you on a project abroad, then in that case it will be an exception. Number two, as a member of the shipping crew, if suppose you work in Indian Navy or you work in merchant Navy, then most of the time maybe you may be in the ship. So because your job is like that. So for those people there is an exception. So this rule will not apply. Still you may be called as Indian citizen because of your employment or shipping crew, you were there. You were not in India. Second exception is that person of Indian origins residing outside visits India during previous year in the above
Given two cases, only first basic condition is applicable and not the second basic condition. इसको अभी छोड़ देते हैं एक मिनट, इसको, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया. बट फर्स्ट कंडीशन इज द एक्सेप्शन. नाउ okay, now if a person does not meet any of these first and second conditions, the person will be known as non-resident of India. Now, within resident of India, there are further two categories. One is called resident and ordinarily resident, and second one is resident but not ordinarily resident. I hope some of you must have studied these things. Yes, have you studied these things, some of you, huh? Yes. Okay. So, but it was necessary to repeat them for the other students who may not have studied these things. Okay. So now, within resident of India, further, there are two categories. Either you are resident and ordinarily resident, and resident but not ordinarily resident. If you translate it in Hindi, I will say आप इंडिया के रेसिडेंट हो और आम तौर पे रेसिडेंट ही रहते हो. दूसरी चीज है, आप रेसिडेंट तो हो इंडिया के, बट आम तौर पे इंडिया में नहीं रहते हो, but not ordinarily resident. So in a lighter vein, in just a lighter vein, nothing official, just to put across my point, in psychiatry also, they divide people who become mad, sometimes. So there are mad people who are mad, but ordinarily, all the times they remain mad. But there are certain people who are, you can call them, some schizophrenic, or there are certain diseases, but ordinarily they will be very normal people. But at times, they will become totally mad. But you will not judge them that they have this kind of thing, but not ordinarily resident. So from that, so I'm just drawing an analogy to you. So they are resident, but they are not ordinarily resident. Now, to become resident and ordinarily resident, there are two additional conditions. What are these? Number one, this person should be residing 730 days or more in India during 7 preceding previous years. Now, these things have to be crammed actually, because these are rules. Now, if I want to have this tag of resident and ordinarily resident, I should be residing in the past 7 years. That is 1920, 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, and 1314. 7 years. Previous 7 years, my total should be 730 days. Well, as far as Mukul Jain is concerned, Mukul Jain has not visited any foreign country in the past 7 years. So it will be 365 into 7. So I am definitely a resident and ordinarily resident of India. Plus, this is not the only condition. Plus, there is second condition also. It's not or, it is plus and. Number 2, he or she must be a resident of India at least 2 out of 10 preceding previous year. Out of 10 preceding years, out of at least 2 years, I should have been a resident. That is according to this law. So definitely in the past 10 years, not to talk about 10 years, in the past 35, 40 years, I have been a resident of India only. Right? So to call yourself as resident and ordinarily resident, you have to meet these two conditions, additional conditions. So if you repeat it 2-3 times, you will just remember them. 730 days or more in the past 7 years. And you must be a resident of India for at least 2 years out of 10 preceding years. If you meet either one of the condition, or
or you don't meet any of the condition, then you will be known as you are resident, but you are not ordinarily resident. That's all. So for to be called as resident but not ordinary resident means either you meet any one condition out of the two, or you don't meet any conditions. Fine. Now, how to calculate residential status of individual? The day of some rules are there. The day of arrival to India and the day of departure from India is to be considered in India. They are also counted. The day the person has arrived in India and the day the person has departed from India. A person may be a resident in 2 or more countries at the same time. It is not essential that the stay should be at the same place in India. You are moving from one place to other, so that doesn't make any difference. It is equally not necessary that the stay should be continuous. You come here in India, say for 15 days, and then you again go back to a foreign country. Again, you come in intermittently, in tranches. So that doesn't make a difference. The total days will be counted. It will be mentioned in your passport, in your visa, etc. So all those things can be known. And the place of stay or the purpose of the stay is not material, whether it is for excursion, whether it is for business purpose. So that is immaterial. That will not make any difference. So there are some examples. So very quickly, I'll just take one example. Let me take an example of Mr. X, and Hindu undivided family also. Okay. For example, are you able to hear me? No. Mr. X, I am audible? No. I just want to check. Yes, sir. Okay, great. Mr. X is a foreign citizen. Yes, he comes to India during the previous year, 16-17, and stays here for 90 days. Determine his residential status for the assessment year 17-18. See, any assessment year could be given in an exam. So, for example, many times income tax department also do the assessment of the previous year. So, assessment year is say 17-18. So, previous year is immediately previous year is 16-17. So, after considering his stay in India in past years. So, this is given in the question that previous year 2002-3 he has stayed 88. So this data has come to the income tax department. So from 2002 to 15-16 number of days are written. So X is a foreign citizen. He comes to India during the previous year and stays here for 90 days. So determine his residential status for assessment year 17-18. So now how we will do the solution answer is Mr. X is a foreign citizen, hence exception to section 6.1 is not applicable to him. Therefore, to become resident of India, he can satisfy any one of the following two basic conditions. First of all, we have to determine whether he is resident or not. So he should be residing 182 days or more during the previous year, or 60 days plus 365 days in 4 previous years. So calculation, previous year 16-17 number of days, it is given in the question. Previous year, immediately previous year was 16-17. It is given 90 days. So 90 days, which is less than 182 days. So first condition, basic condition does not meet. So we'll go to the B, second condition. So second condition is minimum 60 days in the previous years. That is being met because it is 90 days and 4 previous years. Okay, 4 previous year prior to 16-17, 15-16, 14-15. So 15-16 it is given in the question. 125, 14, 72, 180. 180. So we have totaled it 391. So the condition is 365 days. So he meets first condition, that is minimum 60 days. He has stayed 90 days, and the second condition 365 days minimum in the 4 previous years. Yes, 391 days. So he can be called as, although he's a foreign citizen, but he is an Indian resident. So the explanation, it's there. 391 days during 4 preceding years. So as he satisfies both the part
of second basic condition, he become resident of India. Now we have to see whether he is resident and ordinarily resident or not ordinarily resident. So that is why we have written in this slide, as he becomes resident of India. Now further we have to analyze whether he is resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident. So he has to satisfy two basic conditions. Additional conditions are residing 730 days and 2 out of 10 previous years. So from the question we have picked up, that is 16, 17 was the immediate previous year. So 7 years, preceding years. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years. So total is 1071, which is more than 730 days. 730 days. And out of 10 years, out of these 10 years, he satisfied 125 days, so he's resident. Just 1 minute. Resident Indian, NRI, resident Indian. 182 days. Okay, he meets, yes. If you see, he lived 365 days here and 307. So it's more than 2 years. So therefore, we have written he was resident Indian, according to the criteria. So Mr. X was in India for 107 days, which is more than 730 days during 7 preceding 7 years, and was resident in India for 8 out of 10 preceding previous year. Thus, he satisfies both the additional conditions. So conclusion is Mr. X is resident and ordinarily resident of India, R and OR. Although he is a foreign citizen, but from the taxation point of view, we have to see whether he was resident and ordinarily resident, so as to decide, what kind of taxation will be applicable to him. Now, before I open up my another slide, just give me 1 minute so that I'll just give you an idea about the residential status. Yeah, I'll show you from the slide also, but let me just read out if why it is important to see whether a person is resident or non-resident and resident or ordinarily resident. If the income is received in India in previous year, then for ordinarily resident also it will be taxable, for not ordinarily resident also it will be taxable, and for non-resident Indian also it will be taxable. If you have earned any income in India, then whether you are a non-resident or ordinarily resident or not ordinarily resident, you have to pay taxes in India. For example, if there is an income accrued or arisen outside India in previous year from a business controlled or profession set up in India. Let me give you an example. Let us say Infosys company, the IT company has got its offices overseas also. In America, they have offices in Europe, they have offices in many countries. So let us say if a lot of foreigners also work in Infosys. So let's say Infosys branch office is in New York. So in New York, an American is working over there in Infosys. Since he is a foreigner, he has never visited India, so he is a non-resident of India. So he will not pay tax in India, no? It is an Indian company, of course. The origin of Infosys is in India. But since he is an Indian, he will not pay his taxes in India. However, if Infosys has sent any person to New York for say 7 months, 6 months, but he falls under the category of ordinary resident and ordinarily resident, he will still pay taxes in India. Maybe he was for 6 months in America, but he will still pay his taxes in India.
Similarly, if a person is resident and not ordinarily resident, because that is he meets the first basic conditions, but he doesn't meet the additional conditions, still he will pay taxes in India because the company is Indian. Now, second example, I'll show you in the slide also. I'll have to open that slide. Another example is that if income is accrued or arisen outside India in previous year from a business controlled or profession set up outside India from any source outside India. Now, let us say the company is Microsoft. Now, Microsoft is an American company. And so from a business controlled or set up in India from any source outside India. Now, the income, Microsoft has its office, let's say again in California. So in California office of Microsoft, if an ordinarily resident is working over there, that means he's most of the time in India. For a short period of time, he was in California, Microsoft office. Still, he will pay in India. So the tax salary, his income or salary will be taxable in India. But if a person is resident and not ordinarily resident, because it's an American company and the income has also been generated in America, so he will not pay taxes in India, so it will be non-taxable for him. Similarly, for a non-resident Indian or a foreigner, it will again be non-taxable in India. So that is why it is very essential to know the status, residential status of India, whether it will be taxable in India or not. So let me give time to, I'll have to visit. मैंने कहाँ उसको सेव किया हुआ है, एक देयर वाज AKBS, आई थिंक इसमें था रेसिडेंशियल स्टेटस. हाँ, देयर इज अनदर, यस, इसमें होगा. Now you see another slide. Now are you seeing this slide on your screens? एक मिनट यार, और एक मिनट, let me open it in PowerPoint. So this is the summary. The summary is if the SSC is resident and ordinarily resident, it is not for individuals also and for companies and firms also, HUF also. Remember, that is why it is important. So here it is written individual, but it is for everybody. Number one, basic condition, he must satisfy at least one of the basic condition. Then, and in additional condition, must satisfy both the additional condition. Then the person or the firm will be known as resident and ordinarily resident. But if you want to call as resident and or not ordinarily resident, then must satisfy at least one of the basic condition to be a resident and satisfy either one or none of the additional condition, then he or she becomes not ordinarily resident. And if a person has to be called as non-resident, that means doesn't satisfy any of the basic conditions. And additional conditions are not relevant now because, right? Yeah, this is what I was saying. If income is received in India, then for resident and ordinarily resident, that is ROR, it will be taxable in India, yes. For resident and not ordinarily resident also, yes. For non-resident also, yes. For example, suppose Maruti Suzuki, so Suzuki people also from Japan come and visit in India. They are non-resident, they come intermittently to India. But if they have earned any income in India, they have received any income in India, they still have to pay the taxes in India. Because it's an Indian company and the income is also received in India. If income is deemed to be received in India, deemed to be received in India means that, again, taking the same example, the Maruti Suzuki has given an income, but the income was sent when this person, the engineer, came to India and he went back to Japan. The income was sent to him through online payment and he received in India.
but it was actually physically received in Japan, sorry, but it was deemed to be received in India. Deemed means it was supposed to be received in India, but afterward he went to Japan, and so we sent the income in Japan. So it doesn't matter. So deemed to be received in India, again, yes, yes, yes. Income accruing or arising in India. This is again the same thing. Accruing means it has become due. Yes, yes, yes. Income deemed to be accrued. Yes, yes, yes. Then income received and accrued outside India from a business in India. This is the example I was saying, that it is, say, Infosys company. So it is an Indian company, but income was accrued or received outside India, let's say in America. For both of these categories, yes, they will pay the taxes in India, but non-resident will not pay in India. And if the income received or accrued outside India from a business controlled outside India, let's say a Microsoft company or a Google company or a Facebook, they are American company because they are incorporated over there. So then only for ordinarily resident, he will pay in India, because that means he meets to all those conditions. That means most of the time he's in India. So he will pay in India. But for these other two categories, not ordinarily resident and non-resident, they will not pay in India. That is why it is essential to. Okay. Okay. Now, there is another category which is not shown in this slide on the screens. Suppose there is any income, let's say a person worked in Abu Dhabi or in Yemen, or you worked in America, you have earned income over there. Afterwards, you have shifted to India and you have brought all those income in India. So it will not taxed in India, even if you are resident and ordinarily resident now in India. Now, many people are coming back to India in during this pandemic times. Many people from America, they have lost their jobs, or they were there. Now companies are saying you can come back to India. You have to work from home, so why to stay in America? You can come back. So these people will be coming back to India, and so in the subsequent year they will become resident and ordinarily resident. So whatever money they have earned over there, so if they have uh, they have brought this money in India, or they have remitted this money in India, it will not be taxed in India. So for all the three categories, it will not be taxed in India. Right? Now coming back, going back to the previous slide, which I was showing to you, this one. Yeah. Now for HUF, Hindu undivided family, also residential status is important. It depends whether the HUF control and management is partly or fully in India. Then resident of India, ordinarily resident, and fully outside India. If the control and management is fully outside India, then it is a non-resident of India. Now, to determine whether the control is in India, it depends on the Karta only. Karta, that is the head of the family. As I told you, a male member should be married member. He can be a Karta. Only in exceptional circumstances, I told you, a woman can be a Karta when there is no male member left in the family, no major male member left in the family. Then a woman can also be a Karta now, according to the new rules. But so Karta, if he is a resident and ordinarily resident, that is 730 days out of 7 previous years, and 2 years he is a resident, then HUF will be known as resident and ordinarily resident. But if Karta is resident but not ordinarily resident, then the HUF is also known as like that. So it depends on the Karta's status that you will determine the status of HUF. There are many families, where the Karta is in England, in America. There are many families. So it depends on the status, residential status of Karta. As far as company is concerned, now company's residential status will also be determined whether we will be taxing them according to the Indian laws or not. If a company is registered in India,
then it is known as an Indian company. It is as simple as that. If the company has been registered outside India, it is a foreign company. So, for example, you have Hyundai, it's registered in South Korea, it's a foreign company. Walmart is a foreign company. Microsoft is a foreign company in India. They may be working in India, right? Xiaomi is a Chinese company because it is registered in a foreign land. So therefore, Indian company always resident of India, once resident of India, always resident, and ordinarily resident. So it depends on where the company has been registered. So you have also studied the company law, company act. So it depends on the registration. And I told you that time, if you remember, that company, the registered office is very sacrosanct for a company. So company can have many branches, etc. in India, but it is known, its residential status within India is known as by the state in which it is registered. So even in India there are rules. If suppose a company was registered in Gurgaon, so it is Gurgaon is in Haryana. So suppose now company wants to shift its registered office to Delhi. So Delhi is just adjacent, but since it is a different state, so it has to take permission from the central government because they are changing state. If it wants to change from Gurgaon to Chandigarh, so Chandigarh is within the same state of Haryana, but then it will have to seek the permission just of the registrar of companies, and then within the state it can change the registered office by seeking permission from the registrar of companies. But if it wants to change its registered office across the state, then it has to seek the permission from central government, means from the ministry itself, from the Ministry of Corporate Affairs, because different states have got different registrars of company's office. Fine. So if a company is registered outside India, that then it is a foreign company. That means here also, if the control and management is fully in India, so it is always resident of India. Once resident of India, always resident, and ordinarily resident. But if it is fully and partially outside India, then it is known as non-resident of India. Now here also in this slide also we have given Hindu undivided family resident unless control and management of affairs wholly outside India. So RNOR, if manager or karta is non-resident in India, and company resident in India, if an Indian company, if control and management of its affairs is situated wholly in India. So here also, government has subdivided to two parts. That if it's a foreign company, if the control and management is full in India, then they call them resident and ordinarily resident company. So therefore, the taxes will be payable in India. But if the control is partly outside India or fully outside India, then it will be known as non-resident of India. And then yes, the taxes may not be payable fully in India. Similarly, to be called as a firm, association of persons, or body of individuals, or local authority of artificial juridical person, the residential status depends on the control and management of that particular firm. It may be a proprietorship firm, it may be a partnership firm, or association of persons, or body of individuals, or any local authority or artificial juridical person. By the way, do you know what do you mean by artificial juridical person? Any one of you? Sir, Any one of you having an idea of what is this artificial juridical person?
सर आई थिंक फर्म को ही लीगली उसमें ही लेते शायद तो। हाँ सॉरी। सर आई थिंक फर्म को, कोई भी फर्म जो रजिस्ट्रेशन होती है उसी को आर्टिफिशियल में ही मतलब मानते हैं, उसके पर लीगली सब एक्ट हो सकता है। I'll tell you, okay, nahin, I'll tell you one very important, interesting thing about artificial juridical person. Suppose you follow a particular god, a deity. You are a follower of Shiv Bhagwan or Durga Ma. So you can create another entity in its name, and you that will may be called as artificial juridical person. So you can uh, divert some of your money as income of this artificial juridical person. So it will be uh, enjoying all the facilities of exemption, deduction, income tax slabs as the Hindu undivided family. So artificial juridical person. So many times if you go to, if you have got lot of income, all these industrialists and big people, the chartered accountants suggest them that you open an account in the name of, or sometimes even a public corporation established under special act of legislation and body having juristic personality of its own is known as artificial juridical person. There is another connotation that sometimes the government may create juridical person. From Wikipedia, if I see, a juridical person is a non-human legal entity. In other words, any organization that is not a single natural person but is authorized by law with duties and rights and is recognized as a legal person, and as such having a distinct identity. This includes any incorporated organizations, including corporations. So it may be government agencies, NGOs, and it may be any temple also. You can set up a temple or any kind of a trust, also known as artificial person, juridical entity, etc. This they have given in short. Then if I see Indian Qanun, artificial juridical person, it's not given clearly over here. If I see in Business India Today directory, entity such as a firm other than a natural person created by law and recognized as, okay, it is the same definition they have. If I write and a god and also be an artificial juridical person, Indian Qanun Yogendra Nath. Yogendra Nath Naskar versus Commissioner of Income Tax. So there was a case Yogendra Nath Naskar. So this says finding that this is a judgment. It's a copy of the judgment of in a case between Income Tax Commissioner and Yogendra Nath. So they are saying finding that the assessments of the income from the properties of two Hindu deities in the hands of its Shebites as trustees were set aside on the footing that the status of the assessees had not been correctly determined. The income tax officer initiated proceedings for the assessment against the Shebiats of the deities and completed the assessment on the deities in the status of an individual and through the Shebiats on the question whether the assessments on the Shuddha. The Hindu ideal is a juristic entity. ये judgment आया. A Hindu idol
is a juristic entity capable of holding property and of being taxed through its shabiats who are entrusted with the possession and management of its property. A Hindu deity fell within the meaning of the word individual under section 3 of the act and could be treated as a unit of assessment under the section and was capable of being taxed through its shabiats, the word individual, so and so. लिखा है यहाँ पे, neither God or any supernatural being could be a person in law, but so far as the deity stands as the representative and symbol of the particular purpose which is indicated by the donor, it can figure as a legal person, and in that capacity alone the dedicated property vests in it. There is no principle why a deity such a legal person should not be taxed if such a legal person is allowed in law to own property, even though in the ideal sense, or to sue for the property, to realize rent or to defend such property. तो लॉ के अंदर एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एक गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, या बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्रीज वो अपने फैक्ट्रीज के अंदर एक मंदिर बना देते हैं, टेंपल बना देते हैं. सो दे क्रिएट अ एंटिटी and they are spending money on it, so they can show expenses, they are showing income of it. So whatever money, whatever chadawa comes, that is shown as the property of the god. So nobody has the right. So even if you have set up the temple, if you have created a artificial juridical person इन द नेम ऑफ से लॉर्ड कृष्णा, क्या मंदिर है ये, उनके नाम का पैसा है, तो यू नोबडी. अभी रिसेंटली देखिए केस हुआ है, आप गूगल पे पढ़िए, बहुत फेमस केस, बड़े साल से चल रहा था. केरला में देयर इज अ टेंपल, त्रिवेंद्रम में पद्मनाभन टेंपल है, और उसमें वहां के जो पुराने राजा थे उनकी फैमिली एक बहुत बड़े टेंपल को मैनेज करती थी. लॉर्ड पद्मनाभम समथिंग ऐसे कुछ नाम है, लॉर्ड पद्मनाभम. अभी आ जाएगा ये अपने आप कुछ, सॉरी आया ही नहीं. My internet is slow. पद्मनाभा, हाँ ये देखिए, ये ऐसे वहां पर ना, इट इज द रिचेस्ट टेंपल, ठीक है, लिखा है यहाँ पर ऊपर ही आया है, लॉर्ड पद्मनाभा स्वामी इज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल डेटी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवेनकोर. ये केरला में है. दे वर ऑल्सो द लार्जेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. द ओरिजिन ऑफ दिस इज ट्रेस्ड बैक टू द रेन ऑफ महाराजा Marathanada Verma, who took an epoch-making decision that changed the lives of the royal family. अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पिछले हफ्ते एक डिसीजन दिया है कि उसमें जो पैसा था गवर्नमेंट चाह रही थी कि गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट ने कहा ये पैसा तो हमारा है, तो ना गोल्ड फाउंड, व्हाट हैपेंड टू द गोल्ड फाउंड इन केरला टेंपल. तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फैमिली उसको इतने सालों से मेंटेन कर रही है ना फैमिली का है, ये लॉर्ड का ही पैसा है. सो नोबडी कैन टेक इट, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दैट मनी. प्रिंट ये अभी देखिए $1 ट्रिलियन हिडन ट्रेजर चैम्बर इज डिस्कवर्ड. तो ये देखो, ये अभी जुलाई 13, मैंने बोल रहा था ना अभी 15 दिन पहले की न्यूज है, जुलाई 13, 2020, ये लाइव में श्री पद्मनाभा स्वामी टेंपल, HC अपहोल्ड्स द राइट्स. एंड देन NDTV में भी ये देखिए, मैं वेरी क्विकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल. SC अपहोल्ड्स द राइट ऑफ ट्रेवनकोर, रॉयल फैमिली के उन्होंने राइट्स को अपहोल्ड किया है. द वर्डिक्ट, अभी देखो 13 जुलाई की का है ये, न्यूज में देखना. द वर्डिक्ट वाज प्रोनाउंस्ड, कैन यू सी इट, ऑन मंडे. ये लिखा है, on the dispute over management of Tiruvananthapuram historic Shri Padmanabha Swami temple, which is considered one of the richest temple in the country. Supreme Court upholds the right of Travancore royal family in the administration
of temple at Tiruvananthapuram in Kerala. The verdict was pronounced on Monday on the dispute over management of Tiruvananthapuram historic Shri Padmana Swami temple, which is considered one of the richest temple. And the controversy over the administration and management of the historic temple was pending in the apex courts for last 9 years in the wake of charges of alleged financial irregularities. The sprawling temple, an architectural splendor in granite, was rebuilt in its present form in the 18th century by the Travancore royal house, which had ruled southern Kerala and some adjoining parts of तमिलनाडु बिफोर इंटीग्रेशन. कभी आप जाओ केरला तो देख के आना इसको, टेम्पल को. बहुत जबरदस्त टेम्पल है. Even after India's independence, the temple continued to be governed by a trust controlled by the erstwhile royal family. जो उनका फैमिली डेटी है, उनका फैमिली लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं वहां पर साउथ में, पद्मानाभा टेम्पल. द जस्टिस, द बेंच ऑफ Justices U. Lalit and Indu Malhotra held on April 10 last year reserved its judgment. केरला हाई कोर्ट में वहां पर भी चल रहा था केस, तो उसका इन्होंने चैलेंज किया था. हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट. हाई कोर्ट ने बोल दिया था स्टेट गवर्नमेंट को टू टेक स्टेप्स टू सेट अप अ बॉडी और ट्रस्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द टेंपल, इट्स एसेट एंड मैनेजमेंट एंड टू रन द टेंपल इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस. बट इन्होंने फिर चैलेंज किया, अपील की हाई सुप्रीम कोर्ट में. उसके बाद एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था 2011 में. 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस था ये. स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया था स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले उसे टेंपल को. द टॉप कोर्ट हैड आल्सो डायरेक्टेड दैट देयर शैल बी डिटेल्ड इन्वेंटरी ऑफ द आर्टिकल्स वैल्यूएबल एंड ऑर्नामेंट्स इन कलारास वॉल्ट्स. चलो इतना सही है. तो एनीवे, चलो कहने का मतलब ये है कि आई वाज ट्राइंग टू टेल यू आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. अगर आप किसी भगवान के मंदिर के नाम से, तो वो सारा पैसा जो है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के नाम से होगा, लॉर्ड के नाम से वो पैसा होगा. तो उसमें भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है. तो सर ये जो पैसा निकला है $1 ट्रिलियन भगवान के नाम का, तो ना गवर्नमेंट ले सकती है ना फैमिली ले सकती है, तो इस पैसे का होगा क्या? मतलब फैमिली उसको मैनेज करेगी, फैमिली वो पैसा मंदिर के ही उसमें देख रेख में और उसमें काम आएगा. उसके नाम से दान दे दो, कहीं पे भी गरीबों में दान दे दो. वो मतलब भगवान के नाम का पैसा है, वो कोई नहीं ले सकता उसका. ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का ये कॉन्सेप्ट होता है. ये देखो अभी आप इकोनॉमिक टाइम्स में और इसकी डिटेल होगी. ये देखो, 1 सेकेंड बस लगाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है बहुत ज्यादा ये. अरे ये पता नहीं क्या क्या खुल जाता है इसमें. लॉर्ड पद्मानाभा. सर इतना सारा पैसा आइडियल पड़ा हुआ है यहाँ, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है करने को, कुछ दे देना चाहिए. ये देखो, द SC सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई. ये तो पुरानी न्यूज है यार. ये देखो अलग अलग न्यूज दी है इन्होंने एक साथ. 2011 में था, पद्मानाभा स्वामी टेम्पल वेल्थ बिलोंग्स टू लॉर्ड पद्मानाभा स्वामी सेज राजा मराठनादा वर्मा. जो रॉयल फैमिली के हैं वो कहते हैं लॉर्ड का पैसा है, ये ना स्टेट गवर्नमेंट का है ना किसका है. SC had halted the opening of B vault. vault मतलब तिजोरियां हैं वहां बड़ी बड़ी, और अंदर कितने खजाने निकले वहां. 2017 की न्यूज है. विल सीक ओपिनियन ऑफ ऑल ऑन ओपनिंग vault B of पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. 8 diamonds missing from Shri Padmanabha Swami temple. रॉयल फैमिली ने कहा है अगर आप उनकी पद्मानाभ स्वामी की अगर टेंपल की तिजोरियां खोलोगे तो उसमें डेटी स्क्रैच, उनका पाप चढ़ेगा आपको भगवान का. Shri Padmanath Swami Temple, Lord's riches worth more than 1 lakh crore. The staggering amount can help the cash-strapped Kerala state fund several of its program and transform its economy. पूरे स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी से दूर हो सकती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. चलिए ओके, let us go back to our presentation. Now, okay, so this was
the residential status. I just wanted to give an idea to you. Now, business income, non-taxable income. Okay. गिव मी 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा सा एक आपको और इजी टॉपिक प्रिजम्पशन ऑफ इनकम का इसमें है, प्रिजम्पटिव। Okay, I am introducing a new concept to you. We are coming to business income or individual income tax on, you are seeing this heading, tax on presumptive basis in case of certain eligible business or professions. It's an interesting concept I am introducing to you. Tax on presumptive basis, or in other words you can call it presumptive income tax. Any idea about it to any one of you? Tax on presumptive income basis. हाँ जी, एनी आइडिया? कभी सुना है आपने टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस? किसी ने नहीं सुना क्या? अरे कोई बोल नहीं रहा भाई, सुना है तो बोल दो, नहीं सुना है तो यार मत बोलो। नहीं सर, नहीं तो कोई बोल दो नहीं सुना है तो। हाँ ओके, देखो मैं अभी एक सेकेंड आपको 2 मिनट में इसको अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग करके, नहीं स्टॉप प्रेजेंटिंग करके 2 मिनट आपको समझाता हूँ। अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया था ये एक कॉन्सेप्ट, टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस। व्हाट हैपेंस दैट यू नो small business people, they are unable to keep account books, they are unable to spend on accountants and keep account of all cash books, ledger, etc. And so therefore a large chunk of these business people were not paying any income taxes because they were not keeping any account books and all. For example, some grocery shops और सम ट्रक ओनर्स, 1 या 2 ट्रक बनाया हुआ उसने, वो कौन खाते रखेगा, तो वो देते ही नहीं था इनकम टैक्स। और फिर दूसरे साथ उसके साथ प्रॉब्लम भी थी, कौन खाते रखे, कौन फिर अकाउंटेंट्स, खुद हर एक को आता भी नहीं है सारा अकाउंटिंग वर्क करना। सिमिलरली देयर आर प्रोफेशनल्स, like professionals, maybe he may be a lawyer, you may be a doctor, you may be a chartered accountant, you may be a consultant, you may be say recording is on. I have not put off the recording, actually मैंने वो presentation off किया, वरना वो ना 2 images आती हैं। Stop presentation किया है वो, उसके बाद मैं आपको presentation दिखाऊंगा। So therefore some professionals like lawyers, like I also used to work as a professional only. I used to go as a visiting faculty in many institutes. I used to get some training assignments, some consulting assignments. I was not an employed or salaried person. So I used to show my income as a professional. But then I cannot keep account books. I cannot keep track of my all expenses कि मैं उसको सारे bills को उठा के रखूंगा, सारी cash book बनाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए और या कुछ बिजनेस लोगों के लिए, चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हो, चाहे आप कोई शॉप चला रहे हो, रिटेलर हो सकते हैं, आप होलसेलर हो सकते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, तो आपके लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, इन सिंपल वर्ड्स, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। उसमें क्या किया है, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस पर्सन की। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं,
देखो कल को आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यू पीपल कैन ऑल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर। आपको जो विल स्टार्ट स्टार्टअप, और वो हो सकता है आप अपने घर से स्टार्ट करें, या हो सकता है आप छोटी सी प्रमाइसेस लें, तो आपके लिए एक बड़ा इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा एक चीज हो जाता है, पूरा उसका मेंटेन करो, एक अकाउंटेंट रखो, चाहे पार्ट टाइम रखो फुल टाइम रखो, पूरी बुक्स करो, और आपको डर लगा रहता है यार ये मैंने खर्चा नहीं चढ़ाया, डेली के डेली आप कैश बुक पढ़ते हो, बैलेंस शीट्स बनाते हो। इसमें कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कहा आपको कोई अकाउंट बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नथिंग, वी विल नॉट आस्क यू एनीथिंग, बट हु आर एलिजिबल, those business people are eligible whose turnover is up to 2 crore rupees per annum, उसको गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसमैन माना है। पहले 1 करोड़ था, अभी 3 साल पहले उसको 2 करोड़ कर दिया। अगर आपकी टर्नओवर, आपके टोटल रेवेन्यूज अगर 2 करोड़ हैं या उससे कम है, देन यू कैन अवेल दिस प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, अदरवाइज यू कैन नॉट अवेल इट। अगर 2 करोड़ से ऊपर आपके रेवेन्यूज है तो आपको प्रॉपर वही अकाउंट बुक्स वगैरह बनानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, सपोज आपका टोटल रेवेन्यू किसी का 1 करोड़ भी था साल का, तो वो क्या करेगा, सिंपली फॉर्म 4S भरेगा इनकम टैक्स का, और उसके अंदर अपने टोटल रेवेन्यूज लिख देगा, भाई 1 करोड़ आए सपोज, और उसमें गवर्नमेंट कहती है आप 8% आप अपनी इनकम दिखाएंगे, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 8%, यानी कि 1 करोड़ पे 8 लाख का आप प्रॉफिट दिखाएंगे। उसमें ये दिस विल बी प्रिज्यूम्ड, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव deducted all your expenses, whether salaries, whether your transportation cost, your rent, your electricity expenses, your freight, logistic expenses, etc., whatever. So it is presumed that 8% is your profit margin. So whether it is more or less, whether your profit margin is 15%, 20%, government is not asking you anything. अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 5% भी है, लेकिन आप उससे बच रहे हो, आप 8% के हिसाब से 8 लाख पे आप अपना टैक्स देते, वेरी सिंपल। देयर इज सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऑल्सो, जो कि अभी लास्ट 2019 के बजट में इंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली साहब ने, नहीं 2019 में तो पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया था, ये शायद 2018 में जब अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था, तब उन्होंने एक और स्कीम लाया था, टू गिव एन एनकरेजमेंट टू डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो, और हमारे ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक चेक हो, थ्रू बैंक ड्राफ्ट हो, या ऑनलाइन हो, थ्रू पेटीएम हो, या थ्रू एनी काइंड ऑफ वॉलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो या थ्रू बैंक हो, जिससे कि उससे क्या होगा, इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शंस कम होंगे, नंबर 2 के ट्रांजैक्शंस कम होंगे, ब्लैक मनी कम जनरेट होगा, क्योंकि ऑल दैट कैन बी ट्रेस्ड, all electronic payments can be traced, all bank payments can be traced. So if you are showing in my business all the transactions have been through bank or through digital transactions, then I can show a profit margin of 6% instead of 8%, no questions asked. Second alternative can be that I have a shop wherein some people pay me cash, but some people pay me through checks, some people pay me through Paytms or through credit cards or debit cards. So then in that case, I'll have to split all those revenues. So the revenues which I have received by cash, I will have to show a net profit of 8%, and the revenues which I have received through bank transaction or through digital transactions, for them I can show 6% net profit. On that जो भी टैक्स बनता है आप अपना टैक्स दे दीजिए, सिंपल। So what are your views about this scheme? So like, what are your views? You people have become very silent. What has happened to you people? No, no comments, no good. How is this scheme of government? Suppose I am taking your interview. You are sitting in a news channel. So I am asking you, what are your views about this scheme of government? What you will say? अरे यार नाम लेने पड़ेंगे अब। मिस्टर रवि, तुम क्यों चुप हो गए भाई? कमलेश, अब मैं लवन्या मिश्रा कभी नहीं बोलते, मनप्रीत कौर,
मीनाक्षी जोशी, मेघना मुखर्जी, मोहम्मद अमान, मोहम्मद तंजीम, निशा अग्रवाल, हर्षिता आहूजा। हाँ रवि, यस सर। कैसी स्कीम है ये? सही है सर। नहीं, क्या इसमें मेरिट्स आपको लगते हैं, क्या डीमेरिट्स लगते हैं इस स्कीम? सर डीमेरिट तो एक ये हो सकता है कि अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसका 4-5 करोड़ का भी बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को स्प्लिट कर देगा और फिर क्या कहते हैं टैक्स इवेड कर लेगा। यस सर। टैक्स, अच्छा, मतलब दो फर्म के नाम से बिजनेस खोल लेगा, दो अलग अलग। मीन जिनका 500 करोड़ का मतलब बिजनेस है, उसको वो 10 पार्ट में वो करके अपना टैक्स देखो, वगैरह इतना सेव इजी कर नहीं सकते। होता, इट इज इजियर सेड देन डन। वो 10 पार्ट्स में करना किसी बिजनेस को, 10 बिजनेसेस को मैनेज करना, 10 बिजनेसेस को अलग अलग रजिस्टर जो कराना, कि एक्चुअल इट्स में नॉट बिजनेस इजी। नहीं कर रहे बट अपने टर्नओवर को ये कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है एक्चुअली। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकली। आप किस चीज से बच रहे हो? आप बच रहे हो इतने सारे बही खाते एंड अकाउंट से, इतनी सिरदर्दी से बच रहे हो, और उसके लिए आप 10 गुना सिरदर्दी और लोगे, इतनी सारी फर्म्स खोलोगे। ऐसा कोई नहीं करेगा प्रैक्टिकली, ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखो, इट इज अ विन विन सिचुएशन। आई taught you about this word win win when I was teaching you 7 habits. Win win means here in this situation the government is also in a winning position, and it is also a winning position for स्मॉल बिजनेसमैन। देखिए, छोटे शहरों में छोटी जगह पे 2 करोड़ का टर्नओवर भी कम नहीं होता। कहने की बात है 500 करोड़ 400 करोड़ बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं। आज की तारीख में वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के भी नहीं है इतने टर्नओवर। तो 1 या 2 करोड़ का टर्नओवर बहुत माना जाता है। तो उन्होंने 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेसमैन को इंक्लूड किया है इसमें। दिल्ली बॉम्बे में आपको पता नहीं चलेगा, एक छोटा दुकानदार का भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ होगा, बट आप अपनी जगहों में देखें जहां जहां आप रहते हैं, वहां 2 करोड़ का टर्नओवर कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती। तो यस सर। है ना, तो बहरहाल, तो इतने बड़े आप, तो उन्होंने इतना टर्नओवर वाले भी बिजनेसमैन को इसमें इंक्लूड किया है। उसमें क्या है कि पहले क्या था, ये टैक्स देते ही नहीं थे कुछ लोग। जो 25 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है, उसने 1 लाख रुपए महीने की सेल कर ली, वो तो कहीं आता ही नहीं था। अब वो भी कम से कम जो 20 लाख है, 20 लाख के ऊपर यार 6-8% अपना दिखा देगा, और उसके ऊपर टैक्स बनता है तो उतना टैक्स दे देगा। और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है उस पर 6% कह रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें खर्चे उसके कम हुए, ज्यादा है। अगर उसको लगता है कि मेरा लॉस हुआ है बिजनेस में, तो फिर वो फिर नॉर्मल कोर्स में चला जाए। वो फिर प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं जा सकता। प्रिजम्पटिव स्कीम में तो आपको लॉस अगर है तो आप उसमें नहीं जाओगे, देन यू विल हैव टू गो फॉर द नॉर्मल assessment of your business firm. So, government has collected lot of tax because of this, and so many people have come into the net. तो वो लोग कहते हैं भर देंगे, हमारी इनकम भी तो फिर नंबर 1 की हो जाएगी। देखो, ये कोई यस आजकल होशियारी नहीं है कि मैं अपनी, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सारी इनकम, पहले लोग बड़े खुश होते थे मैंने सारी इनकम अपनी कमा ली और गवर्नमेंट को 1 पैसा टैक्स नहीं दिया, लेकिन इनकम भी तो मेरी ब्लैक में हो गई वो सारी। कल को आई कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी आउट ऑफ दैट मनी। आई कैन नॉट बाय, अगर मैं कुछ घर में कोई चीज बाय करता हूँ तो आजकल सब चीज कॉमन हो गई। आधार कार्ड एक कॉमन हो गया, पैन कार्ड कॉमन हो गया, मतलब इजीली ट्रैक हो जाता है। इवन आजकल आप अगर 2 लाख से ज्यादा किसी होटल में खर्चा कर रहे हो, तो उसमें भी आपको अपना पैन कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी। आप कोई पार्टी दे रहे हो, कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हो, कोई आप मैरिज पार्टी कर रहे हो, तो जहां आपका बिल आया किसी होटल में, किसी बैंक्वेट हॉल में किया, इमीडिएटली गवर्नमेंट का आ जाएगा, यार आप लॉस तो दिखा रहे हो बिजनेस में, आपने 10 लाख रुपया फूक दिया 5 स्टार होटल में, शो मी द ट्रेस ऑफ योर मनी, कहां से आया ये पैसा। आप कोई गाड़ी लेके आए, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। सब जगह आपके पैन नंबर, आपका कहीं ना कहीं सब चीज कॉमन है ना, तो वो ट्रैक हो जाते हो। तो आज की तारीख में हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी इनकम को शो करूं, जिससे कल को मैं उसका एक्चुअल खर्चा कर सकूं। आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, बिकॉज स्टॉक मार्केट में एवरी कैश इज नॉट यूज्ड। स्टॉक मार्केट में योर मनी हैज टू बी गो थ्रू योर बैंक अकाउंट ऑनली, राइट? सो देयरफॉर people also now
आर पेइंग इन टैक्सेस। तो उसमें थोड़ा सा कर लेंगे भाई, 2 करोड़ की टर्नओवर, 1 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, मैं उसकी 75 लाख दिखा दूंगा, 50 लाख की मेरी टर्नओवर है, मैं उसका 30 लाख दिखा दूंगा, इतना तो चलेगा। बट ऐसा नहीं है मैं उसको जीरो कर देंगे। सो लॉट ऑफ पीपल हैव कम इनटू द नेट एंड गवर्नमेंट हैज गॉट सर फिर समथिंग आपको आउट ऑफ इट। और लोग, एंड यू आर यू नो, आपकी टेंशन खत्म हो गई, आपका उतना खर्चा भी तो होता है सारे अकाउंट्स बुक्स वगैरह मेंटेन करने में, सारे बिल्स विल्स को इकट्ठा करने में, और प्लस आपकी अगर टर्नओवर, आपका अगर प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तब भी आप 8% से दे रहे हो, शो कर रहे हो अपनी इनकम, तो ये भी तो बेनिफिट है आपको। हाँ, जो बहुत कम मार्जिन पे कर रहे हैं, 2% पे 3% पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये शायद स्कीम ठीक नहीं होगी, वो फिर अपने नॉर्मल वे में चले जाएं। गवर्नमेंट ने किसी को कोई बाउंड तो किया नहीं है, एक ऑप्शन दिया गवर्नमेंट प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अंतर्गत। सिमिलरली नाउ आई कम टू प्रोफेशनल्स। Professionals, like tomorrow you can be a independent professional, and if you are showing an income out of profession, आप कोई let's say कोई ट्यूशन कर रहा है, कोई विजिटिंग फैकल्टी में जा रहा है, कोई वकील है, आप कोई कंसल्टिंग के पैसे मिल रहे हैं, you can show under presumptive income scheme. Here who are eligible? Those professionals whose income, whose total revenues in a year should not exceed 50 lakh rupees. सो बिजनेस के लिए तो है 2 करोड़ रुपीस का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड फॉर प्रोफेशनल द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टोटल रेवेन्यू इज 50 लाख, बिकॉज फॉर प्रोफेशनल 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू काफी होता है। 50 लाख में 50% तक आई कैन शो माई एक्सपेंसेस एंड 50% आई कैन शो माई इनकम। आई कैन शो माई इनकम मोर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन फिलिंग माई टैक्स रिटर्न्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, आई वाज शोइंग इनकम एज प्रोफेशनल इनकम, तो मैं 20, 25, 30% अपने एक्सपेंसेस शो कर देता, बाकी मैं अपनी इनकम शो कर देता 70%। और क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं फिलअप कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल, तो मेरे को स्लैब रेट भी मिलता है। इन द केस ऑफ बिजनेस फर्म देयर इज अ फ्लैट रेट। जैसे पार्टनरशिप फर्म में मैं आपको बताऊंगा, अभी पार्टनरशिप फर्म में देयर इज अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। जो भी आपकी इनकम आई है 30% आपका फ्लैट रेट टैक्स लगता है। बट इन इंडिविजुअल्स जो हमने आपको बताया था, फर्स्ट 2.5 लाख 0%, नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, सो लाइक दैट स्लैब रेट। फिर देन यू गेट डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन आल्सो। तो मैं पिछले सालों में अपनी इनकम टैक्स जीरो कर लेता था इस तरह से, स्लैब रेट, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए 80C के 80D के, और आप अपनी, और या थोड़ा बहुत टैक्स बना तो टैक्स रिड्यूस हो जाएगा बहुत आपका। सो दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। So you must know this about this scheme, because most of you can avail of this scheme if you start an entrepreneurship or you start working as a professional. So now I am showing you this write-up. This is by the income tax department only. So tax on presumptive basis in case of certain eligible business or profession. अरे हाँ, I have to show my thing. अब शेयर भी तो करनी पड़ेगी स्क्रीन को। So all of you understood the concept of presumptive income scheme? Yes, sir. Yes, sir. So it is a very good scheme and it is a general knowledge also that you people must know. वरना छोटे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करो या पहले सारे खाते वाते का हिसाब किताब रखो, तो इंसान ना घबराता है उसमें। और मेरे को फॉर एग्जांपल, मैं एज ए प्रोफेशनल करता रहूं, कोई अकाउंट बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपने फिलअप किया फॉर्म भी बड़ा सिंपल है उनका। तो अब now this is also called ease of doing business. So this is a part of ease of doing business in a country. Yes, I was trying to show you this. So I am reading this, first paragraph. I hope you are able to see it once again. हाँ, देख रहे हो ना आप? You are able to see it. Yes, sir. Yes, sir. So it is. So see my cursor, to give relief to small taxpayers from the tedious job of maintenance of books of account and from getting the accounts audited. The Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under sections 44AD, then another section 44ADA and section 44AE. In this part you can gain knowledge about various provisions. 44AD मैं आपको बता दूं, this is for
businessman. 44 ADA ADA is for professionals and section 44 A is for transport companies. ये स्पेशली ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए बना है और उन ट्रांसपोर्ट कंपनीज के पास जिनके पास 10 ट्रक तक हैं या 10 गाड़ियां हैं, कैरेज हैं, उनके लिए भी ये स्कीम है। 10 से ज्यादा ट्रक हैं तो फिर आप इस स्कीम का अवेल नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है इसका ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम? As per Income Tax Act, a person engaged in business or profession is required to maintain regular books of account, and further he has to get his accounts audited. So to give relief to small taxpayers from this tedious work, the Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under such and such section. So a person adopting the presumptive taxation scheme can declare income at a prescribed rate and in turn is relieved from tedious job of maintenance of books of account and also from getting accounts audited. So who can avail this scheme? It can be availed, number one, by resident individual, you and me. It can be availed by resident Hindu undivided family, HUF, or third by resident partnership firm. बट नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या अगर कंपनी खोली आपने तब आपके लिए स्कीम नहीं है। नॉट फॉर कंपनी, बिकॉज कंपनीज के लिए तो फिर नॉर्म्स बड़े टफ हो जाते हैं ना, दे कैन नॉट अवेल कंपनी वेदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, एंड इवन फॉर LLPs इज आल्सो लाइक अ कंपनी, सो नॉट फॉर LLPs. So in other words, the scheme cannot be adopted by a non-resident or by any person other than an individual HUF or a partnership firm, but not LLP. So it can, so these are exceptions. They cannot, business AD, 44 AD में बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस रिफर्ड इन सेक्शन 44 AE में आते हैं, ये AD में नहीं आएंगे। जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या गुड कैरेजेस चला रहे हैं, और अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर आप कमीशन पे काम कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज या एजेंसी बिजनेस चला रहे हैं, तब आप अवेल नहीं कर सकते, उनके लिए बस एक्सेप्शन है। सो एन इंश्योरेंस एजेंट कैन नॉट अडॉप्ट द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44 AD. Similarly, now I am reading this bold lines. A person, see my cursor, a person whose total turnover or gross receipts for the year exceed 2 crore cannot adopt the presumptive taxation scheme. तो आप क्या करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं बिजनेस में, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स लेते हैं, उसमें फिर लेस एक्सपेंसेस करते हैं और फिर टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकलती है। उसके बाद फिर और दूसरे इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल, जैसे एबिडिटा निकल जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड टैक्सेस। उसके बाद फिर हम अमोर्टाइजेशन लेस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर टैक्स, फिर निकलता है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट लेस करके फिर EBT निकलता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, फिर बाद में टैक्सेस माइनस करके फिर पैट निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो ये आ गया, ये बीच में आया है, देखिए ये इनकम टैक्स से ही मैंने लेटेस्ट निकाला है। ये देखो ये लिखा है ना, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, मेरा जहां कर्सर है, ये प्लीज सी दैट in case of a person adopting the provisions of section 44 AD, income is computed on presumptive basis at the rate of 8% of the turnover or gross receipts of the eligible business for the year. फिर देखिए मैंने जो चीज बताई थी आपको, in order to promote digital transactions and to encourage small unorganized business to accept digital payments, Section 44 AD is amended with effect from the assessment year 17-18. मैंने बताया था ना 3 साल पहले आया था ये. To provide that income shall be computed at the rate of 6% instead of 8%. If turnover or gross is received by an account payee check or an account paying bank draft or the use of electronic clearing system through a bank account or any such electronic mode.
तो है ना कितना सिंपल। प्लस इसमें यह है द प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट इज द फाइनल इनकम एंड नो फर्दर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड और डिसअलाउड। इसमें अब कोई और खर्चे आपके अलाउड या डिसअलाउड कुछ नहीं होंगे, बस ये फाइनल नेट आपके रिवेन्यूज के हिसाब से आपने कहा कि इतने हिसाब से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चाहे 20% कमा रहे हो, 25% कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, आप इसके हिसाब से हमें टैक्स देते हो, ये इनकम हो गई आपकी। नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सर जिनका 2 करोड़ से नीचे है और जो प्रॉफिट में है वो ये स्कीम अवेल करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ये भी है, देखिए कॉन्सिक्वेंसेज इफ अ पर्सन ऑप्ट्स आउट फ्रॉम अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने इस साल प्रिजम्पटिव इनकम ली है, नेक्स्ट ईयर आपको लगा यार प्रॉफिट कम है, मैं नॉर्मल वे में चला जाता हूँ, फिर थर्ड ईयर में फिर प्रिजम्पटिव पे आ गया, ऐसे नहीं है मर्जी से आपको। तो इसमें ये लिखा है ऐसे नहीं है जब मर्जी में आया, जब आपका फायदा मिल रहा है इसी साल तो आप प्रिजम्पटिव में आ गए, इसी साल नुकसान हो रहा है तो आप नॉर्मल में आ गए। तो लेकिन इसके लिए रूल बनाया है कि 5 साल आपको एक ही स्कीम में रहना पड़ेगा। इफ अ पर्सन ऑप्ट्स फॉर, देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपको, इफ अ पर्सन ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम then he is also required to follow the same scheme for the next 5 years. If he failed to do so, then presumptive taxation scheme will not be available for him for the next 5 years. अगर आपने लगातार 5 साल नहीं चलाई है प्रिजम्पटिव, आप अगले साल फिर नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो फिर आपको 5 साल अगले साल नॉर्मल स्कीम चलानी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल ये सारा एग्जाम्पल दिए हैं। If he did not opt for presumptive, in this case, he will not be eligible to claim benefit of presumptive taxation for the next 5 years, 5 assessment years. अब है ADA, this is for small taxpayers engaged in specified profession. देखो नॉर्मली 50 लाख से ऊपर के रिवेन्यूज प्रोफेशनल्स के उसके होते हैं, जो बहुत बड़ा कोई लॉयर होगा उसके होंगे, अदरवाइज 50 लाख के अंदर मैक्सिमम प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। बहुत बड़ी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होगी तो होंगे, अदरवाइज जो है ना इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोफेशनल, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर्स, एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। इसमें सिंपल लिखा है इफ अ पर्सन अडॉप्टिंग द इनकम विल बी कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस दैट इज 50%, क्योंकि इसमें उसका कोई माल तो ला नहीं रहा है, वो उसके खर्चे वो होंगे उसका, लेकिन इसमें क्या खर्चे उन्होंने मान लिया, लेट्स से आप कोई बुक्स खरीद रहे हैं, आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो आपने लीगल की बुक्स खरीदी होंगी, आप अपना ऑफिस मेंटेन कर रहे हो तो उसकी बिजली हो गई, उसका आपने कोई लड़का भी रखा हुआ है, आप क्लाइंट्स जब आते हैं उनके लिए चाय पानी करते हो, तो वो सब कुछ उन्होंने 50% खर्चे में मान लिया। ये भी बहुत दे दिया उन्होंने, 50%, इतना खर्चा कहाँ होता है। आप अगर प्रोफेशनल हो तो आपका क्या खर्चा है, कई बार तो आप अपने घर से भी काम कर रहे हो, तो फिर भी इन्होंने कह दिया 50%। However, such person can declare income higher than 50%, ये भी इन्होंने दे दिया। मतलब 50% जो इनकम है उस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा या उस पे भी फ्लैट टैक्स है रेट? नहीं, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो स्लैब रेट से लगेगा, अगर मैंने फर्म खोल रखी है तो फर्म के ऊपर फिर एक फ्लैट रेट आता है। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ एज ए मुकुल जैन, मैंने अपना, मैं एडवोकेट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, तो मेरे को तब भी स्लैब रेट भी मिलेगा, फिर उसके बाद एक्सेम्पशन और डिडक्शन भी मिलेंगी। अगर मेरे पास टोटल रेवेन्यू लेट से 15 लाख के आ रहे हैं, तो 15 लाख में मैंने 7.5 लाख रुपया मेरा एक्सपेंस, 7.5 लाख रुपया स्ट्रेट अवे मेरी इनकम हो गई, उसके अंदर फिर मैं स्लैब रेट लगा करके इनकम दिखाऊंगा। मैंने 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख के ऊपर मेरे को रिबेट भी मिल गया, तो मेरी इनकम टैक्स 0 हो गया। तो 15 लाख वाला 0 इनकम कर सकता है इसमें, और उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भाई तेरा 5% है, बिल दिखाओ, पेट्रोल के बिल दिखाओ, कुछ जरूरत नहीं है। उसने बुक खरीदी नहीं खरीदी, उसका सीधे 50%। 20 लाख आपके रिवेन्यूज आए, 10 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, 10 लाख रिवेन्यूज आए, 5 लाख इनकम दिखा दो, 5 लाख में टैक्स फ्री हो, वैसे ही हो गया आपको इंडिया जो मैंने आपको रिबेट का बताया था एक चीज, ठीक है। चलिए
तो ये मैंने आपको इसलिए एक 44 AE बता रहा था मैं, दिस इज फॉर लीजिंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरेज है। इनके लिए एक अलग एक फॉर्मूला बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन ओनिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सो इफ अ पर्सन ओन्स मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, देन ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम। इसमें क्या है, इनका सिंपल फॉर्मूला है, इन केस ऑफ व्हीकल्स अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, income will be computed at the rate of 7,500 for every month or part of the month during which goods carried is owned by the taxpayer। जो भी आप ट्रक चला रहे हो, छोटा ट्रक है, उसमें 7,500 रुपया पर ट्रक पर मंथ आपकी इनकम मान ली जाएगी। और अगर आपके पास बड़ी व्हीकल है, 12,000 किलोग्राम से ऊपर, यानी 12 मीट्रिक टन से ऊपर की अगर गुड्स व्हीकल है, तो उसमें 1,000 रुपया पर टन के हिसाब से आपका क्रॉस व्हीकल वेट अगर है, तो 1,000 पर टन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट दिखा दो, कोई आपको खाते रखने की जरूरत नहीं। So if the actual income is higher than the presumptive rate, that is higher than 1,000 or 7,000, then such higher income can be declared. So heavy goods vehicle means any goods vehicle having gross vehicle weight of more than 12,000 kilogram or 12 metric tons. So these are some of the rules. So we are stopping it over here. So I think so we have studied two very major topics of residential status as well as presumptive income scheme. So I think that has set a ground for further sessions. So then in the next sessions we will talk about business income, how to calculate, how to apply depreciation and all. If you have any other question, please ask, do ask. I hope you were able to understand whatever we have taught. So I've tried to talk in a very simple language. And one thing, my last sentence now, majority of the businesses are small businesses in India. Majority of the businesses will fall under 2 crores. So the government idea was that, we can cover a large chunk of India into this. Even I have found transporters, having 2 trucks, 3 trucks, 4 trucks. वो लोग या तो किराए पे दे देते हैं अपने ट्रक्स, या 3-4 ट्रक से ही बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फैमिली चला रहे हैं, तो वो लोग इसमें आ सकते हैं। Okay, any question? Okay, so thank you so much. We will meet you tomorrow. Tomorrow is another session of ours. So I am stopping the recording. Thank you so much. Let's meet tomorrow.